Hello everyone, welcome to my YouTube channel technologywithamit. So basically in this video we are just going to discussing the concept of for loop in the list or the list comprehension. So starting with for loop, so we are iterating our list with the help of for loop or while loop concept. So if you watch our previous videos, so you know the concept of list, what are the append function, what are remove function, what are to be index function, index and all. Slicing is to be what and what is the use of in keyword. So these are some concepts. After clearing these videos, you just watch this video because all the concepts are clear in the previous videos. So start the iteration of the list. So first we are declaring our list. So our list name is to be L6, we are passing some values in the L6. So we are declaring with like names. Name is to be Amit, with Ram, Syam. So these are some names in our list. So we are iterating this with the help of for loop. So the syntax of for loop is to be this: for I in, we are passing only list in this. So you are printing the value of I. So you get the output Amit, Sumit, Ram, Syam. So this is to be the concept to print the these values in the list. So if you want to make this with the range function, so we are declaring with like for I in range. So we are passing the range, like we have range is to be what? The length of L6, length of L6. So our for loop is to be work from 0 to like our range is to be length of this list is to be 0 1 2 3 4. So we have four elements, so length of to be this L6 to be 4. तो ये 0 से लेके थर्ड इंडेक्स तक चलेगा, तो starting with the 0 and end up to 3 because n minus 1 तक जो भी for loop है वो range की हेल्प से चलती है, तो इस पे आपको सिंपल फोर एलिमेंट गेट होंगे. तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ like L6 of I, sorry, this is not the correct syntax. So we are passing noun braces here. So you get the answer Amit, Sumit, Ram, and Syam. This is getting the same output with this, but the concept is to be different. You are passing here list, whole list, but here we are just passing the value of the particular length. Sorry, length of the particular list. So this is a different concept. So if you are using the while loop, so for that we are initializing our I. So we are starting with the 0 and creating a while loop. So while condition is to be I is up to length of L6, and we are just clearing the concept of I. So we are printing here. We are printing L6 of I and I plus plus. So there are some errors. We are just restart our kernel. Our kernel is to be restarted. After restarting our kernel, we are just getting the output. Sorry, this is the wrong syntax. We are passing here I plus I equal to I plus 1. So we get the output. So in this particular code, we are just initializing our I is to be 0 and we are starting with a 0 and up to length of 6 means we are starting with a 0 and up to 3. So our loop is to be started with 0 and end up to 3 value, and we are printing the element of the particular list. So we are printing the index 0. So our index 0 is to be Amit. So Amit is to be printed, and after printing we are just increment the value of I. यहाँ पे I बढ़ के 0 की जगह 1 हो जाएगा, तो कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड. फिर से प्रिंट करेगा, यहाँ पे I की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे सुमित प्रिंट होगा.
उसके बाद जैसे ही फिर से आप इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, राम प्रिंट होगा, फिर आप प्रिंट करने के बाद फिर इंक्रीमेंट करेंगे तो श्याम प्रिंट होगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करके यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे तो वहाँ पे फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो आपकी लूप वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, so this is the syntax or code for printing the element of list with the help of while loop. There are some errors because I'm just initializing with plus plus, so sorry. So the next concept of the list is to be sort. They sort the list with the help of sort list is to be the next topic. First we are discussing about list comprehension. So we are not declaring the heading. So we are starting the list comprehension. So first we are starting the list comprehension. We are making a new list. So our list is to be list one. So our list is to be getting updated with value like we have banana, apple, and cherry. ये हमारी एक फ्रूट्स के नेम्स की लिस्ट है। इसके अंदर हम सिंपल एक और लिस्ट बनाता हूँ मैं, जैसे कि जिसका जो कि एम्प्टी लिस्ट होगी उसके अंदर हम डेटा को अपेंड करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक लगाने के बाद, तो उसके बाद मैं सिंपल आइटरेट करूंगा लिस्ट के अंदर। सो फॉर आई इन रेंज वी आर पासिंग लिस्ट वन, सो वी आर पासिंग लिस्ट वन here and making some logic here like the concept is to be that यदि लिस्ट के एलिमेंट के अंदर यदि a एग्जिस्ट करता है तो आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड करेंगे, अदरवाइज आप आगे बढ़ के सेकेंड एलिमेंट को चेक करेंगे और यदि उसमें ए एग्जिस्ट करता है तो आप उसको अपेंड करेंगे, देन कंटिन्यू द प्रोसेस इज टू बी अप टिल until the list is to be end. So we are declaring the concept like if a is to be exist in the list one, so the concept is to be this, sorry, in the I we are using the I is here, so our data is to be the I in I, so we are just appending new list append I. So this is to be our code. We are just printing our new list. So we are printing here new, so you get the output banana and apple because we are getting a in this particular banana or apple. We have apple in the apple we have started with a, in the banana we are second value is to be a, so we are just appending these two values, but cherry not exist a in this particular word, so our cherry is to be not append in the new list, so our output is to be banana and apple. सिंपल कॉन्सेप्ट है, यदि a इसमें एग्जिस्ट करता है एलिमेंट में तो आप उसको अपेंड करेंगे, अदरवाइज उसमें अपेंड नहीं करना है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने ये प्रोग्राम बनाया। यदि मैं इसका जनरल रियल लाइफ में यदि एग्जांपल लूँ तो जैसे कि आपके पास n नंबर ऑफ डेटा है, जैसे कि मैं कुछ यूजर्स का डेटा लेता हूँ, तो लिस्ट लिस्ट थ्री के अंदर एक डेटा है। The list is to be this, we have like 21 VTA. This is to be the roll number for each and every student. So this is the roll number of particular student. We are copy this roll number and just change it for each and every list. So the second one is to be also starting with the 21 BTA and the roll number is to be 2. And we have more elements. कुछ elements जो हैं ये मतलब ये 2021 बैचेस के स्टूडेंट हैं और कुछ स्टूडेंट हैं इस लिस्ट के अंदर जो कि जिनका बैच है वो 22 है। क्लियर, यदि मैं यहाँ पे 22 पास करता हूँ और कुछ स्टूडेंट का और मैं यदि यहाँ पे मैं यहाँ पे 23 भी पास करता हूँ तो यहाँ पे ठीक है। तो ये कुछ डेटा है, इसमें आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से केवल आप 2021 के जो स्टूडेंट का डेटा है उनको आप न्यू लिस्ट में अपेंड कर दीजिए, बाकी के जो डेटा है उनको रिमूव या एग्जिस्टिंग लिस्ट में रहने दीजिए। ठीक है, इसके लिए मैं यूज करूंगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, सिंपल एक न्यू लिस्ट बनाऊंगा। सो न्यू इक्वल टू एम्प्टी अभी असाइन करने के लिए,
उसके बाद मैं फॉर लूप चलाऊंगा फॉर आई इन पर्टिकुलर लिस्ट 3। तो इस आइट्रेशन के थ्रू आप एक एक एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं। उन एलिमेंट्स में मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ like 21 is to be exist in the I, so we are appending like new dot append, we are appending the value of I, so we are appending this and print the new list. You get only the 21 started roll numbers like 21 BTA3 ARI, 21 BTA3 ARI 2, 21 BTA3 ARI 1. So n number of डेटास को विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन ऑफ कोड आप एनालाइज कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं और आपकी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर सेव कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डेटा साइंस के ट्रेनिंग मॉडल, टेस्टिंग मॉडल और सम कॉन्सेप्ट्स में यूज होते हैं। जैसे कि आपको कुछ डेटा मिला जिसमें से कुछ बाइसेस थे, उनको रिमूव करना है, पर्टिकुलर डेटा को आपको गेट करना है, तो आप इस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से आप वहाँ पे ये परफॉर्मेंस करके क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू। In the next video, we are just discussing out the concept of sorting in the list with like reverse sorting in ascending order, descending order, और कुछ लाइक एक्सक्लूड और इंक्लूड फंक्शन का हेल्प से आप दो लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं, डेटा को एक दूसरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सो वो सब देखेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी तमिल। बाय बाय।